Good evening, sir. Good evening, Archie. पहला सर्किट, दो सर्किट है. अच्छा अच्छा. Individual circuits I have done. Now see. अच्छा, लव है. यस सर. हमने ना लास्ट क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था. तो तुम्हें आइडिया है ऑल्टरनेटिंग करंट का? यस सर. करंट वगैरह ना, करंट की करंट लैग करता है, कब लीड करता है, वोल्टेज क्या होता है, फेजर्स कैसे बनाते हैं वगैरह वगैरह. इस समय मैंने नोट्स देख लिए थे. देख लिए थे ना. चलो, अभी इसमें क्या है ना कि इसके आगे बढ़ते हैं अपन. इसके आगे अब देखो, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया है कि इंडिविजुअली जो सर्किट्स होते हैं उसमें अपन वो कैसे निकालते हैं, मतलब करंट कैसे निकालते हैं और वोल्टेज कैसे निकालते हैं. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसकी ना कैलकुलेशंस कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, पहले लेते हैं अपन आरसी सर्किट. पहले आरसी सर्किट ले लो. इसका एक बार आइडिया ले लोगे तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर तुम खुद ही कैलकुलेशन कर पाओगे आराम से. आरसी सर्किट ऐसा होता है जिसमें पहले एक रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है. ये तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से कनेक्टेड होता है. अब हमारा काम क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब आई इज इक्वल टू, तुम्हारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है. तुम्हारा काम क्या है कि तुम्हें यहाँ पर ना रिजल्टेंट वोल्टेज, जैसे इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 होगा, तो तुम एक्चुअली, क्योंकि तुम जानते हो कि जब तुम करंट सप्लाई करते हो तो वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, वो सब तुम लोग निकाल चुके हो ऊपर. मैं ऊपर निकाल चुका हूँ. जैसे यहाँ पर अपन ने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा अगर हमने सप्लाई दिया है तो, या करंट करंट अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं. तो वही चीज अपन यहाँ पे यूज करेंगे. तो करना क्या है देखो, जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना होता है, हमें एक्चुअली क्या करना होता है, वी रिजल्टेंट निकालना होता है. मतलब अगर हम इस सेटअप को, ये जो सेटअप है, इस सेटअप को ऐसे करते कि मतलब इसकी जगह पर हम कोई एक ऐसा रेसिस्टेंस रिप्लेस कर देते एक्स, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है वो V1 प्लस V2 होता. तो उसके केस में इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती और वो जो नेट वोल्टेज है वो क्या होता, वो सब. और उसमें जो ये जो फेसर्स की जो नॉलेज है ये किस तरह से काम आती है, वो सब चीजें अपन सीखते हैं. देखो, V1 अपन ऑलरेडी जानते हैं कि V1 की वैल्यू क्या थी, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी. इसका तुम लोग अगर फेसर बनाओगे तो फेसर भी ऐसे बन जाएगा. ये है वोल्टेज, ये है टाइम. V अक्रॉस C मतलब जो V2 होगा वो क्या होता है, आई नॉट बाई ओमेगा सी ना. Yes, sir. आई नॉट बाई ओमेगा सी. साइन क्या होता है इसके आगे, ओमेगा टी I think it माइनस is माइनस पाई बाई टू ना. minus I, yes. ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. So then what happens, you will be drawing the phasor for this way, V2. It will be I naught by omega c. This angle will be pi by 2. Now your purpose is to calculate V1 plus V2. How you will do V1 plus V2?
v1 plus v2 will be v resultant. For that you have to use your knowledge of vectors. How you will find it? It will be, this is angle theta, suppose v resultant into sine of what, omega t minus theta. But how you will Yeah. find v resultant? V resultant square will be equal to I naught r whole square प्लस आई नॉट बाई ओमेगा सी। देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो वेक्टर का एडिशन है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर v1 प्लस वी टू हम ऐड कर रहे हैं, v1 और v2 दोनों ही हमने उसको वोल्टेजेस को अपने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जैसे अपन जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वैसे ही अपन यहाँ पे इनको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपली रिजल्टेंट निकालेंगे जो इनका एडिशन होगा, वी रिजल्टेंट, और फिर उसके बाद वो किस एंगल पर है वो शो कर देंगे, तो हमारा एडिशन हो जाएगा। वही वेक्टर एडिशन होता है। प्लस 2 इंटू आई नॉट आर इंटू आई नॉट बाई ओमेगा सी इंटू कॉस 90 डिग्री। सही है ना? सही किया है मैंने? हाँ Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now V resultant square is equal to I naught R whole square plus I naught by omega C whole square. This is 0 because cos 90 is 0. So your V resultant has become I naught root over R square plus 1 by omega C whole square. So V1 plus V2 has become I naught root over R square plus 1 by omega C whole square. And what about this angle theta? You know tan theta is equal to I naught by omega c. By I naught r na? Yes. Right. Yes. 1 by r omega c. So theta you will get like this. Theta you can write, theta is equal to tan inverse 1 by r omega c. There is another way also, see, because we know we actually represent xc is equal to 1 by omega c. So we can represent this also as like this, I square I naught root over r square plus xc whole square, that way. And also 1 by this one is tan inverse xc by r. This is another way of writing, both are same. This is how we add it. Now this V resultant has become, V resultant is equal, sorry, V1 plus V2 net voltage I naught root over r square plus xc whole square sine of omega t minus theta. This is how you represent it. Now one more thing is, see, if I have changed this, मतलब अगर मैंने इस सिस्टम को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्रेजेंट किया, मतलब एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया, जिसका मैंने इम्पीडेंस Z माना है ना, इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस Z माना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि is equal to I naught Z sin of omega t minus theta. तो इसलिए जो इम्पीडेंस हो जाता है वो हो जाता है रूट ओवर आर स्क्वायर Okay. प्लस एक्सी होल स्क्वायर. दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 by omega c whole square. This is how we do the calculations. Okay, sir. Now in the same way, the way I have done this, you have to do for LC circuit. This concept you understood now, because we have to find, see, this is the series case.
when I have taken these in series, R and C was in series. Now, if R and C was in parallel, what you will do? Acha, let me discuss with you the parallel case also. सर इन पैरेलल हम वोल्टेज इक्वल कर देते क्या? हाँ, मैं तुम्हें यहीं पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपन पैरेलल में ना कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, क्योंकि देखो जहां तक जेई मेन कंसर्न है, जेई मेन एक्चुअली तुमसे सीरीज वाले क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि सीरीज एक्चुअली तुम्हारे और सीबीएसई बोर्ड तो छोड़ ही दो, सीरीज सीरीज ही चलता रहता है उनमें। पैरेलल वाला केस वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन एडवांस की जब बात आती है तो पैरेलल वाला केस डिस्कस करवाएगा। अब पैरेलल की कैलकुलेशन तुम लोग कैसे करोगे वो देखो। ये है रेसिस्टेंस आर। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जब भी कैलकुलेशन करो तो उसमें ना सीरीज और पैरेलल दोनों साथ में किया करो, जिससे कि तुम्हारी हैबिट अच्छी बने। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम यहाँ पर जैसे आई नॉट दिया था ना, अभी यहाँ पर v इज इक्वल टू हम वी नॉट साइन ओमेगा टी देंगे वोल्टेज। अब पैरेलल में अपन जानते हैं कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम यहाँ पर वोल्टेज सेम है, करंट कैलकुलेट करोगे, I1 और I2। करो, कर सकते हो, या मैं करके दिखाऊं? अच्छा, यू कैन डू इट, Yes, sir. I can try. राइट? What you have to do now, you have to, in this particular case, because we have found out what is current across the capacitor, current across the resistance also we have found Yes, here sir. this way. Those values you will put here, this current across the capacitor and current across the resistor, Okay, okay. and then you will have to Then we can add find them. that. Then Okay. total current, total like V resultant you have found, like that you will do I1 plus I2, drawing the phasors, and then you will write that as V by V naught by R resultant, V naught by Z.
Sir, is the answer epsilon naught square root 1 by r square plus c omega whole square? Means epsilon naught is outside the square root and inside 1 by r square plus c omega whole square. Hmm. I think you are correct. C omega. What about others? See, let me show it to you. Let me show you guys. Just you'll get the idea first in the beginning how to do it. फिर उसके बाद तुम लोग कर सकते हो. फिर उसके बाद तुम लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा ये. एक बार मैं इसका भी करा के दिखा देता हूँ. आई अक्रॉस रेसिस्टेंस जो I1 होगा वो क्या होता है? V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, है ना? Yes, sir. I2 क्या होता है? V So नॉट it's cv naught and then I think C this ओमेगा omega. साइन Yes. ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ना. Yes, plus pivot. This, if you want this, you can write like this also. V naught by 1 by xc also. 1 by xc? No. V naught by xc na. V naught by xc, yes. V naught by xc sine of omega t Xc plus is pi by 2. Xc is 1 by c omega, 1 by right? omega c. Hmm. Yes. So that's why. Now, if you need to add I1 plus I2 to get the net I net, so this, for this you will have to first draw the phasors. अच्छा, तुम लोग आइडिया समझ रहे हो ना मैं कर क्या रहा हूँ? कि ये चीजें पता है बहुत, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, एडवांस का भी क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा. क्योंकि ये देखो, हर जगह जहां भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा वो तुम्हें वोल्टेज मतलब सीरीज में तो ऐड करना सिखाते हैं, लेकिन पैरेलल वाला नहीं सिखाते. पैरेलल वाला भी जरूरी होता है, क्योंकि तुम फैक्टोरियली ऐड कर रहे हो ना चीजों को. तो हो गया वी नॉट बाई आर, यहाँ पे आई है, ये टी है, और दूसरा वाला जो है वो इधर है 90 डिग्री पे. इसकी वैल्यू है वी नॉट बाई एक्स सी, वी नॉट सी ओमेगा, वी नॉट बाई एक्स सी. ये 90 डिग्री एंगल पर है इससे. ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तुम लोगों को. रिजल्टेंट निकालोगे ऐसे करके. दिस इज रिजल्टेंट, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो वी रिजल्टेंट इज, सॉरी, आई रिजल्टेंट, आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, आई रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट सी ओमेगा होल स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई आर होल स्क्वायर प्लस अगेन 2 into v naught c omega into v naught by r into cos of 90. This is 0. Now it becomes v naught, I resultant becomes v naught root over c omega whole square plus 1 by r whole square, which you can write as v naught root over 1 by r whole square plus 1 by xc whole square. This is I resultant. So if you write I1 plus I2 will be now I net, which is v naught root over 1 by r whole square plus 1 by xc whole square into sine of omega t plus theta. Theta we have to find. Theta, tan theta is equal to your v naught c omega, because v by v naught by r. Theta will be equal to tan inverse c omega r, or in a different way you can write r by xc. Tan inverse r by xc. This is another way. This is how you calculate things.
Okay. If you equate it with this v naught by z sin omega t plus theta, I resultant, I net, that case z will become, z is equal to 1 by root over. You did one mistake, Archie. Did you say z impedance is equal to No, 1 sir. by root of, no? No, That sir. mistake you did. This is how you add it. अब मुझे ये बताओ, किसी को डाउट है क्या नहीं? देखो, इसके थ्रू मैंने तुम लोगों को ये बता दिया है कि जब हम चीजों किसी भी दो चीजों को आर और सी को, या फिर आर और सी को सीरीज में, या फिर आर और सी को पैरेलल में जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसके केस में हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मतलब नेट करंट, नेट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, जब उसको हम उस सर्किट को हम रिप्लेस करते हैं किसी एक जेड से, किसी एक रेसिस्टेंस से, तो वो इम्पीडेंस क्या होता है, चाहे सीरीज हो चाहे वो पैरेलल वाला हो. बताओ, किसी को कोई डाउट है? विजिता, अशिका, No, लव्य, नहीं है ना? no, sir. अब कर लोगे? अच्छा, अब मैं तुम्हें वो देता हूँ. अब मुझे बताओ, इसके बाद सर्किट कर लिया अपन ने, आरसी सर्किट अपन ने कर लिया है. अब एलसी सर्किट कर लो. पहले फटाफट आरएल सर्किट कर दो. होगा सर. Do the calculation for RL circuit in the series as well as parallel. Is the thing is I naught root over L omega square plus R square. Is this the answer? L omega square plus R square ना? हाँ, correct. But what is theta? Wait one second. Tan inverse L omega by R.
सर बोलो बोलो। सर हम्म। सर जेड 1/√1/r² प्लस 1/ओमेगा l²। हाँ सही है, वेरी गुड। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो वन, और ये थीटा क्या आ रहा है? थीटा भाई सेम आ रहा है। वही tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, ओमेगा l। ओमेगा एल बाई आर। Yes, sir. Yes, sir. Same thing. I'm also getting. तो योर आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस थीटा, यू गेटिंग ना? Yes, cos omega t minus of cos omega t. This is tan the equation actually. tan थीटा इज एक्सएल बाई आर। भाई ओमेगा, हाउ दिस इज। सर हम्म। नेगेटिव होगा क्या? ये देख रहा हूँ यार मैं, मुझे भी ऐसे कि मेरे पास रिजल्ट नहीं है, बस मैं करके देख रहा हूँ। तो शायद नेगेटिव होगा तो एंगल में ना। हाँ नेगेटिव तो होगा ही, माइनस थीटा होना चाहिए ना। नहीं, tan थीटा इज इक्वल्स टू -xl/r शायद। करंट लैग करता है ना इसका, आई टी वी नॉट बाई आर, ये है वी नॉट बाई एक्सएल। तो अगर तुम इसका रिजल्टेंट निकालोगे, यहाँ होगा थीटा है ये, tan थीटा। गलत निकाला यार, tan थीटा एक्सएल वी नॉट बाई आर, आर बाई एक्सएल होना चाहिए था। Yes, sir. I sir. हम्म, Opposite. Opposite. Sorry, sir. Yes, opposite. opposite होना चाहिए था। बाकी सब तो ठीक है, आर बाई ओमेगा एल होना चाहिए था, आर बाई एक्सएल। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर बाई एक्सएल होना चाहिए था। बाकी सब तो ठीक है। वो नेगेटिव थीटा नेगेटिव वगैरह नहीं लोगे, क्यों पता है? तुम्हें तो बस इस थीटा से मतलब है ना, वो जो नेगेटिव वाला जो एस्पेक्ट है वो तुमने ओमेगा टी माइनस थीटा में कर लिया ना। ओमेगा टी ऊपर गए, सॉरी ये मैंने एंगल गलत दिखा दिया जरा। यस सर। ओमेगा टी तो तुम ऊपर गए हो, ये है ओमेगा टी। ओमेगा टी ऊपर गए हो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फिर वो ऊपर से नीचे आए हो, माइनस थीटा किया है। तुम्हें बस थीटा कैलकुलेट करना है वो ट्राइंगल में, वो नेगेटिव वाला एस्पेक्ट तुमने ले लिया उसमें। ओके। Okay. बाकी लोगों को किसी को डाउट नहीं है ना? अशिका, श्रीजिता, सब कैलकुलेशन हो रही है अच्छे से? बहुत हल्की हल्की आवाज आई श्रीजिता तुम्हारी। सर मेरा पैरेलल में डाउट था, अब समझ आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ सर। और अशिका, ओके है? यस सर। अब तुम एक काम करो। अच्छा अब अपन ने ये कर लिया ना, आरएल सर्किट कर लिया। अब एक आरसी सॉरी, आरसी सर्किट हो गया ना, तो सबसे पहले किया है। अब एक एलसी सर्किट कर, अच्छा एलसी सर्किट रहने दो। एलसी सर्किट तो वो है, रेजोनेंस सर्किट होता है।
बताऊंगा उसके बारे में बाद में। अब तुम करो आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट कर दो। एक होता है, उसको कर दो सीरीज में, फिर एक पैरेलल में कर दो। इसको भी तुम नहीं, इससे पहले ना, इससे पहले एक काम करो, एलसी सर्किट ही कर दो। एलसी सर्किट की भी कैलकुलेशन कर दो, वो मैं रेजोनेंस वाला सेटअप बताऊंगा तुम्हें बाद में। पहले एलसी सर्किट का कैलकुलेशन कर दो, फिर तीनों का करेंगे। सर्किट सीरीज एंड is the thing is L I naught omega whole square plus I naught by omega c whole square minus 2 I naught L I naught square L whole root means yes, that only. आई नॉट I इंटू। naught then is I naught root over L omega square plus 1 by omega c square minus 2L. वाई एल ओमेगा स्क्वायर, it will be omega l minus 1 by omega c whole square should be there, na? Means the result, the impedance that you will get is omega l minus 1 by omega c. सर Okay. हाँ। सर voltage across the capacitor is I naught omega c sin omega t plus pi by 2. हम्म, नहीं, ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और ओमेगा c डिवाइड में कि मल्टीप्लाई? ओमेगा सी मल्टीप्लाइड में वी नॉट ओमेगा सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कैपेसिटर और इंडक्टर में दोनों में लैग करता है वो पाई बाय 2 से। कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है ना, वो लैग करता है पाई बाई 2 से। और नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ सही कह रहा हूँ। कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है पाई बाई 2 से। और जो It lags. हाँ, और इस इंडक्टर, इन इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स बाय एन एंगल पाई बाई 2। लिख के बताऊं, लिखूं? यस सर। कैपेसिटर में, इन कैपेसिटर जो वोल्टेज होता है V इज इक्वल टू होता है V नॉट ओमेगा सी साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2।
This is VC. V across L is V naught by omega L sine of omega t plus pi by 2. सर इसमें अहेड रहता है पाई बाय 2 से। हाँ, ओमेगा टी के वोल्टेज अहेड रहता है। करंट की अगर बात करोगे तो IL जो होता है वो होता है सर पर आई आपके नॉट। नोट्स में तो लिखा हुआ है कि ये लैग करता है पाई बाय 2 से अक्रॉस इंडक्टर। नहीं नहीं सॉरी, सही लिखा, उल्टा पढ़ रहा नहीं हूँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं सही लिखा, सॉरी सॉरी सॉरी। हो सकता है मैं गलती कर दूं। नहीं नहीं, आपने सही लिखा है, आपने कभी सही कभी लिखा। तो साइन ऑफ ये होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और VC जो IC होता है, IC इज आई नॉट बाई ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आपने इंडक्टर में ओमेगा एल में वो कर दिया, वोल्टेज में वो मल्टीप्लाई में होगा और करंट में शायद डिवाइड में है ओमेगा एल। हाँ हाँ हाँ, ये भाई यार उल्टा कर दिया ना मैंने। VL इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई नॉट आई नॉट बाई ओमेगा सी। इसमें सही कर रहा हूँ क्या, मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir, you are doing it correct only. VL इज इक्वल टू I naught by omega L, I think. आई नॉट ओमेगा एल। I naught omega L, yes. हाँ, IC इज इक्वल टू नॉट ओमेगा सी हियर V नॉट बाई ओमेगा एल। अब ठीक है ना? ठीक है लगे। यस सर। Is it tan inverse L omega square C, the angle? tan inverse L omega square C. so the angle is not a angle. No. Then Angle will be along that line only. 180. No, they are 180. they are along one 180. line only. It's the Right, resultant right, right. line. Correct. Perfect. 180. It depends which one you choose. Which one you choose as greater. Yes. See why, you know? If I draw for the series, it will be if you draw the phasors, the phasors will be like this. For omega, for this one, it will be ahead 90 degree. For this, it will be at omega t. No. Why? What I have done? This one for this capacitor, na? For capacitor, it will be here. Opposite one. Opposite, same line. Yes. Because So if pi we, by 2 plus pi by 2. 180. Pi. correct. Because this is omega t, na? This goes by pi by 2. So this is this one. And here we write this is I naught by omega c, and this is I naught omega l.
Now, see, it's up to you. If you want to take the resultant and you have taken this is greater means if you have taken omega L is greater than 1 by omega c, then in that case your resultant will go in this way, this direction. V resultant, and V resultant will be which will be I naught into omega L minus 1 by omega c sine of what, omega t plus pi by 2. This is that case when omega L is greater than 1 by omega c. And now if you have taken omega L is less than 1 by omega c, in that particular case, your resultant will be in this direction. Here, V resultant. And this V resultant in this case will be V1 plus V2, which is I naught into 1 by omega c minus omega L sine of omega t minus pi by 2. This is how you have to write it. And Z, the impedance that you were trying to write, impedance in this case will be omega L minus 1 by omega c, or you can write XL minus XC. Here in this case, the impedance will be XC minus XC. It depends what you have chosen as greater one. Got it? Everything right? So these Yes, are sir. two different cases. One is this, other is this. I have written by this green color so that in this diagram you will be able to see this green color represents this below calculation, this black color represents that above calculation, the black one. ये भी black में अब पैरेलल का कर दो.
So the answer is V naught by omega L minus CV naught omega. Means where V naught by omega L greater than CV naught omega. Correct. Angle is same, 180. Angle is same like the previous one. Okay. Now I'm giving you one homework for you to do. Do it for LCR circuit. This will be your final one, then we will be able to solve the questions. LCR circuit, do the calculations for series, and the second is parallel. Find net voltage and impedance. Here find net current and impedance. This is your homework. Do it as homework. Then in the next class, we'll be able to solve questions on this. No one has doubts now? Everything is clear? And again, happy Raksha Bandhan to all of you. Tomorrow is Rakhi. So celebrate it well. Thank you, sir. Same to you, sir. Thank you. Let's end the class then.